Khushbu Sharma and Rajendra Kumar Meena are livestock assistants posted in the Badgaon village of Udaipur district in Rajasthan. Drenched in the rain, the duo have been travelling to remote villages to treat animals as the lumpy skin disease has begun to infect some of the cattle here. Khushbu Sharma has treated so many cattle in just over the last 1 month that she can now swiftly inject cattle with medicine without the animals feeling a thing. People like Khushbu and Rajendra are the foot soldiers of the dedicated action that the district administration of Udaipur has kick-started as lumpy skin disease broke out in several villages of the area. In Udaipur city, the Joint Director of Animal Husbandry, Surya Prakash Trivedi, has set up a COVID-style control room in a veterinary hospital. Trivedi is running a control room in his office. After having travelled through Gujarat and the bordering districts of Gujarat and Rajasthan, we have now arrived in Rajasthan. We are at Udaipur, and today we are speaking to the Joint Director of the Animal Husbandry Department here in Udaipur. He's right here with us, and he is going to tell us about how the lumpy skin outbreak is being controlled in this city. Now, Udaipur has not had a huge impact of the outbreak. The number of infections are not as high, and from him we are going to learn how he has been and how his team has been working to ensure that the disease does not spread too much. नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, आप ये बताइए कि हमने यहाँ पे जैसे आपके जो आपकी टीम है उन्होंने हमें थोड़ा ब्रीफ़ किया और उन्होंने हमें आपके कंट्रोल रूम के बारे में बताया, तो हमें आप थोड़ा सा ये बताइए कि यहाँ कब से जो है केसेस शुरू हुई हैं और आपने ये कंट्रोल रूम कब से स्टार्ट किया है? ये कंट्रोल रूम तो जैसे ही पहला केस मिला फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में और लास्ट वीक ऑफ जुलाई के मिड में, उस दौरान में केस मिला, तब से कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है। ज़िला स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया गया है और सारे ब्लॉक लेवल पर इंडिविजुअल जो ब्लॉक ऑफिसर्स हैं उनके भी लिए वहाँ उन्होंने एक रैपिड रेस्पॉन्स टीम बनाई है ताकि वो सर्विलेंस भी करे और रैपिडली उसको डील भी कर सके जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं। जैसा हमने गुजरात वगैरह में गुजरात के डिस्ट्रिक्ट्स में देखे हैं, उतना हाई आपके यहाँ केसेस नहीं हैं, तो कैसे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं? जो टीम्स जा रही हैं ग्राउंड में, वो क्या सलाह दे रही है और क्या ट्रीटमेंट कर रही हैं? बेसिकली क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बेस पर सर्विलेंस की जा रही है और एक दफ़े जब हो जाती है इस्टेब्लिश, हमने सैंपल भेज दिए हैं, एक बार इस्टेब्लिश अगर होती है तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बेस पे ही उसका सर्वे किया जाता है और जैसे ही इन्फेक्टेड केस के सिमिलर केस जानकारी में आते हैं वो लंपी मान करके उसका आइसोलेशन करते हैं हाथों हाथ में और रैपिडली इन्फॉर्म करते हैं कंट्रोल रूम को, और जो इलाके में आदमी है, जो टीम है, वो उनको आइसोलेशन की जानकारी देगी, अवेयरनेस भी देगी ओनर को और उसको आइसोलेट भी करेगी और उसका ट्रीटमेंट भी शुरू कर देंगे और दूसरे एनिमल्स से सेग्रीगेट करके और पेस्ट कंट्रोल का काम करेंगे। Working with volunteers from a local NGO called Vriksh, Trivedi is fielding calls from different gram panchayats across Udaipur, each asking for a doctor to visit either for treatment or to report a suspected case of lumpy skin disease. Kailash Vaishnav, who runs the Vriksh NGO, then coordinates with the nodal veterinary officer of the concerned ward. He passes the information to the doctor, who then travels to remote villages to get more information. ThePrint followed one such team to Udaipur. Over 20 kilometers from Udaipur is a village of Sare. Nestled among hills, the roads to Sare are filled with potholes. Incessant rain in the region have made the road conditions worse. Sare has no mobile network connectivity. There is a designated spot atop nearby hill where villagers have to go to make a call. Dr. Subhash, veterinary officer stationed at Chirwa village, has received information that there is a probable case of lumpy skin disease in Sare. At Sare, he gathered the villagers and patiently listened to them describe the case. He then briefed the gathering on what the disease is, how it's spread through mosquitoes, flies and ticks, and what precautions need to be taken to prevent further spread.
His team then distributed pamphlets with information about the disease along with medicines for deworming the cattle. Deworming ensures that the body's immune system is able to fight pathogens better. Subhash's day is now divided in two halves. The first is dedicated to visiting villages that have no infections. In the latter half of the day, he visits villages with lumpy skin outbreak for treatment. Meanwhile, Senior Veterinary Officer Dr. Dattare Chaudhary has been out in the field all day attending to cases. Without stopping for lunch, his team restocked medicines and syringes in their bags at the Badgaon Veterinary Center to continue treating more animals. While on duty, Chaudhary also has to keep updating the district level officials through a WhatsApp group created for tackling the disease. From the Badgaon Center, the team first went to Madar to treat a cow that had been infected with the lumpy skin disease. On reaching, Chaudhary realized that despite their advice to isolate the calves of the infected cow, the family had not done so. As a result, the cows were now developing symptoms of lumpy skin disease. यहाँ पिछले 2 अगस्त से ये पशुओं में विशेषतः गायों में लंपी स्किन डिसीज़ नाम की बीमारी से पशु पीड़ित हो रहे हैं और पशुओं में ये बीमारी फैल रही है। विशेषतः इस बीमारी में पशुओं में पहले उसके नाक से पानी बहता है, आँखों से पानी आता है और पूरे शरीर में, जानवरों के पूरे शरीर में ऐसे छोटे छोटे फफोले आते हैं जिसको लम्प्स वो आते हैं। लम्प्स मतलब गांठें, और वो गांठ आकर के पूरे शरीर में गांठें होती है और इसलिए कहते हैं इसको लंपी स्किन डिसीज़। तो पूरे शरीर, स्किन एक अपना शरीर का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे ज़्यादा स्किन है और स्किन ही अफेक्टेड हो रही है इस बीमारी है। ये कैप्री पॉक्स मतलब ये उसके रिलेटेड वाला पॉक्स मतलब ये वायरल बीमारी है और इसकी वजह से इसमें एक बात है कि ये वायरस की बीमारी है, ज़ूनोटिक इम्पोर्टेंस का डिसीज़ नहीं है। पशुओं से मनुष्यों को में ये बीमारी नहीं फैल रही है, ये एक इसका थोड़ा सा अच्छा पार्ट है। प्लस इस चीज़ में पीड़ित पशु का हम दूध भी उबाल करके काम में ले सकते हैं। So that was Dr. Dattare Chaudhary who gave us a brief of what the situation in his areas in Udaipur. We have tracked a number of villages in near Udaipur. Right now we are in Madar, which is 14 kilometers away from the city, Udaipur city. And here, even though the cases were not as high as many other districts of Rajasthan, the cases have just begun to spring up in several areas. And here, particularly in this area, we have seen a number of a lot more cases than usual. The district officials are working on war footing to ensure that the disease does not spread any further, and as many animals as possible are saved from the disease. This is Mohana Basu, special correspondent at ThePrint. We are on the ground tracking all the developments around the lumpy skin outbreak with our photo editor Praveen Jain. Do keep following us on social media for the latest updates on this outbreak.